Hi, this is Kamran Ali, and today I'm going to discuss some vocabulary to describe people. Describing people is one of the topics which comes in O level English language 1123 paper. I can be contacted at kamranali.asal@gmail.com. I can also be contacted through my WhatsApp number, that is 092 021 Let's begin. Our first word is bow-legged. It means having legs that curve outward at the knee, as you can see in the picture. The legs, they're curving outward. Now let me give you a sentence for this word. Ahmed was terribly bow-legged, as if he had just got off a horse. Ahmed was terribly bow-legged, as if he had just got off a horse. Now, let me tell you, bow-legged is a medical condition, and of course, such people deserve our support. All right, another word we have is knock-kneed. It means having legs that curve inwards so that the feet are apart when the knees are touching, as you can see it in the picture. This is also a medical condition. Let me give you a sentence of this word. Ali was badly knock-kneed, as if hiding something between his knees. Ali was badly knock-kneed, as if hiding something between his knees. Pot-bellied. It means having a large stomach that sticks out, as you can see it in the picture. Let's take a sentence for this. Qasim should not wear double-breasted suit, considering that he is pot-bellied. Narrow-waisted, it means skinny. She reminds me of thin wine bottles, as she is narrow-waisted. Fair-haired, that means having light-colored hair. He is from Ireland, and the girls in my town love him as he is fair-haired. Dark-skinned, that means having brown or black skin. My English friend always go on holidays thinking that he will return dark-skinned and beautiful, but he comes back red-faced and with peeling back. Red-faced, of a person having a red face, especially as a result of exertion, embarrassment, or shame. There are three reasons for three reasons which can actually make you red faced. Either it could be because of exertion, embarrassment, or shame. All right, let me give you the same sentence which I gave you for the word dark-skinned. My English friend always go on holidays thinking that he will return dark-skinned and beautiful, but he comes back red-faced and with peeling back. Now here we can see that he is red-faced as a result of exertion, not as a result of embarrassment or shame. All right, so faced. Now, its another pronunciation is sore, which is American pronunciation, and it means the one who usually has unpleasant expressions on his face, the one who is unfriendly. Let me give you a sentence of this word. You are sore faced, as if you knew tomorrow was going to be the end of the world.
Light fingered, that means someone who is prone to steal, someone who is likely to steal. I have to keep an eye on her when she comes to my room. She is light fingered. Cross-eyed, this is also a medical condition. It means having eyes turned inwards towards the nose. If you keep on staring at the picture, you will go cross-eyed. Strong-willed, that means determined or stubborn. My sister asked me yesterday that how to parent her strong-willed child. Big-headed, that means arrogant. He never talks to anyone. He is big-headed. Cold-blooded, that means callous or without emotions. I've never seen him smile. He is cold-blooded. We can also see the caption here. It says, Mr. Spook, you are the most cold-blooded man I have ever known. And we can see that Mr. Spook's reaction. He says, why? Thank you, doctor. And we don't see any sort of emotion on his face. Round-shouldered, that means having shoulders that curve down and forward. It's a medical condition. She doesn't want to wear sleeveless top as she thinks that it doesn't suit her, for she is round-shouldered. Empty-handed, that means without bringing or taking anything. Let me give you a sentence of this word or for this word. He has earned a bad reputation of going to birthday parties empty-handed. He has earned a bad reputation of going to birthday parties empty-handed. All right, I hope students you have understood. Before I finish it, I would like to discuss them in Urdu for your better understanding, or you could, or for the reason that you could cross-check your understanding. All right, bow-legged, having legs that curve outward at the knee. यहाँ पे जो आप देख रहे हो जो टांगे हैं वो बाहर की तरफ ऐसे हो जाती हैं, बाहर की तरफ निकलती हैं, राइट, आउटवर्ड एट द नी, राइट. और ये एक मेडिकल कंडीशन है. और ऑफ कोर्स ऐसे लोग जो हैं वो हमारी सपोर्ट डिजर्व करते हैं. और जो सेंटेंस मैंने आपको दिया था वो एक थोड़े से स्लाइटली डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में था. वो ये था कि अहमद was terribly bow-legged as if he had just got off a horse. तो वो बुरे तरीके से bow-legged था जैसे कि अभी घोड़े से उतरा हो. तो जरूरी नहीं है कि आप पैदाइशी ही bow-legged हो. For some in some situations, right, you are forced to be bow-legged. knock-kneed एक दूसरा लफ्ज है. इसका मतलब क्या है कि आपके जो घुटने हैं वो मिले हुए होते हैं और आपकी जो फीट हैं वो अपार्ट होते हैं, अलग होते हैं. और ये भी एक मेडिकल कंडीशन है. और लेकिन इसको किसी और सिचुएशन में भी यूज किया जा सकता है. जैसे मैंने आपको सेंटेंस दिया था, अली वाज बैडली नॉक नीड एज इफ हाइडिंग समथिंग बिटवीन हिज नीज. सो समटाइम्स ऐसा भी होता है कि हम कोई चीज हाइड करना चाह रहे होते हैं तो हम नॉक नीड हो जाते हैं, राइट. ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप बॉर्न नॉक नीड हो. सम सिचुएशंस में, किसी सिचुएशन में आप नॉक नीड बन भी सकते हो. ऑलराइट, उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है पॉट बैलेड. इसका मतलब बहुत ज्यादा मोटा होना, कि आपका स्टमक बाहर आ रहा है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर. नैरो वेस्टेड का मतलब बहुत स्किनी, दुबला. फेयर हेयर्ड, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, लाइट कलर्ड हेयर जो होते हैं उनको कहा जाता है. Dark skinned is quite obvious. Red faced, एक तो ये red faced है, T की साउंड निकलेगी, faced,
राइट। दूसरा ये कि 3 वजूहात से हो सकता है, एक एग्जर्शन, एम्बैरेसमेंट और शेम, राइट। तो किसी वजह से भी यू कैन बी रेड फेस्ड। ऑलराइट, साउ फेस्ड, यहाँ पे जो साउ फेस्ड है, एक दो प्रोनाउंसिएशंस हैं, एक ब्रिटिश एक अमेरिकन। अमेरिकन इसको सौर कहते हैं, ब्रिटिशर्स आर खा जाएंगे, वो कहेंगे साउ फेस्ड, राइट। और इसका मतलब है कि आप बहुत ज्यादा अनप्लेजेंट एक्सप्रेशन कैरी करते हो हर वक्त अपने फेस पे, यू आर अनफ्रेंडली। लाइट फिंगर्ड का मतलब है कि समवन इज प्रोन टू स्टील, लाइकली है कि वो चोरी करेगा, उसकी आदत है या उस चांसेस हैं कि वो करेगा। और इसके लिए मैंने आपको सेंटेंस दिया था, आई हैव टू कीप एन आई ऑन हर व्हेन शी कम्स टू माय रूम, शी इज लाइट फिंगर्ड। इसका मतलब ये है कि वो चांसेस हैं कि वो चोरी कर ले, इसीलिए उसको लाइट फिंगर्ड कहा जाता है। क्रॉस आइड का मतलब है बहंगा होना। स्ट्रॉन्ग विल्ड के दो मतलब हैं, एक पॉजिटिव कॉनोटेशन है, वो डिटर्मिन्ड होना, पुख्ता इरादा रखना। एक जो है वो स्टबन, जिद्दी बच्चे जैसे होते हैं, उनको भी आप स्ट्रॉन्ग विल्ड कहेंगे। बिग हेडेड वो है जो कि हर वक्त प्राउड है, रहता है, गुरूर है, उसको अपने ऊपर तकब्बुर लिए हुए घूमता है। कोल्ड ब्लडेड इज समवन जिसकी इमोशंस नहीं होती है, इमोशंस डिस्प्ले नहीं करता। राउंड शोल्डर्ड अगेन एक मेडिकल कंडीशन है, इसमें आपके जो शोल्डर्स होते हैं वो नीचे की तरफ होते हैं और बाहर की तरफ आधे होते हैं, एज यू कैन सी इन द पिक्चर। एम्प्टी हैंडेड का मतलब है कि ना तो आप कुछ लेकर गए ना लेकर आए, ठीक है। तो यू विदाउट ब्रिंगिंग और टेकिंग एनीथिंग, राइट, ओके। इसके लिए मैंने एग्जांपल दी थी कि एक जो है, ही हैज अर्नड अ बैड रेपुटेशन फॉर गोइंग टू द बर्थडे पार्टीज एम्प्टी हैंडेड, ठीक है। यानी कि उसकी रेपुटेशन खराब हो गई है इस मामले में कि वो जब भी जाता है तो बर्थडे पार्टीज में तो विदाउट गिफ्ट जाता है, एम्प्टी हैंडेड जाता है, खाली हाथ। आई होप स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टूड ऑल ऑफ देम। प्लीज कीप building your vocabulary because of course it improves your writing skills. And if you have any question or if you want to clear things up, you can discuss with me during my online classes. Stay home, stay blessed, have a nice time. Thank you. Yeah, please don't forget to like my video so I keep on uploading such videos. Thank you.